Our first leadership style is autocratic leadership, which is also known as boss centered leadership. Under such kind of style, an autocratic leaders exercise complete control over the subordinates. He does not delegate any authority, any power to subordinates. He only gives order and expect the subordinates to follow them. He gives rewards and puts penalty to direct the subordinates. But it will have also some advantages. First one is it helps to take quick decision. It provides strong motivation and satisfaction to the leader. It may bring positive changes or positive results when the great speed is required. It also has some disadvantages or limitation. That is, it leads to frustration and low morale among subordinates. No initiative. Initiative level of subordinates may goes down. And third one is no development of subordinates takes place. The example of such type of autocratic leadership style in real life is like Adolf Hitler. He totally dictate their subordinates. He expects absolute obedience from his members, from their subordinates. And it is suitable only where the subordinates are not much educated, unskilled, lack of proper knowledge and experiences. And where the leader prefer to be dominant in decision making. ऐसी छोटी कंपनीज या ऐसी जगह जहाँ पे लीडर चाहता है कि टोटल उसके ऑर्डर को फॉलो किया जाए, उसकी सुनी जाए, वहाँ पे ये सूटेबल होगा. Second style of leadership is democratic leadership, which is group centered leadership. Under this style, leader takes decision in consultation with employees. He delegates authority and decentralize the authority, distribute the power among the subordinates. Leaders follows the opinion of majority. यहाँ पे वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेता है, सारे ग्रुप के ओपिनियन लेने के बाद कंबाइंड डिसीजन लिया जाता है. The advantages of such leadership style is it improves job satisfaction and moral of employees. It improves decision making ability of subordinates, and it reduces the labor turnover and absenteeism. Labor turnover means जहाँ पर जिस कंपनीज में एम्प्लॉयज़ बार बार चेंज होते हैं वहाँ पे लेबर टर्नओवर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो लेबर टर्नओवर कहलाता है. क्योंकि वहाँ पे नंबर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉय देखेंगे, लेकिन दे आर कीप मूविंग टू अदर कंपनीज. ठीक. इट हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. फर्स्ट वन इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड मे डिले इन डिसीजन मेकिंग. अब जब डिसीजन लेना है, सबका ओपिनियन लेना है, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो इट मे टेक टाइम.
Second disadvantage is misuse of authority. Subordinates to whom delegation of authority is given may misuse the authority, and it is suitable nowadays. All the MNCs follow such kind of leadership style. All the big companies follow such kind of leadership style. Third one is laissez-faire or free rein leadership, which is open-handed leadership. Under this style, complete delegation of authority is given to the subordinates. They are totally open to do their own way, and the leaders only gives resources needed by the subordinates. इस पैटर्न में सबॉर्डिनेट्स को टोटल इंडिपेंडेंसी दे दी जाती है और रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। वो अपना डिसीजन खुद लेता है। द एडवांटेजेस ऑफ सच लीडरशिप स्टाइल इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब, satisfaction and morale of subordinates. It increase the positive effect and morale of subordinates. It also maximize the scope of development of subordinates. क्योंकि subordinates खुद काम कर रहे हैं तो उनका development भी होगा. And third one is optimum utilization of potential and capacity of subordinates. आपने सबॉर्डिनेट्स को टोटल इंडिपेंडेंसी दी है, वो अपनी पोटेंशियल फुल पोटेंशियल से काम करेगा, फुल कैपेसिटी से काम करेगा. इट ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज अंडर दिस स्टाइल सबॉर्डिनेट्स डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर, एंड subordinates may work in different directions and result in chaos and result in confusion. सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ confusion क्रिएट होगी, chaos क्रिएट होगा. It also ignores the contribution of leader. लीडर ने तो सिर्फ रिसोर्सेस अवेलेबल कराए थे, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई थी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो श्रेय है, जो पूरा का वो सब subordinates ले लेते हैं. And this style is suitable where subordinates are highly knowledgeable and well trained, and it is also suitable where subordinates are self motivated and are ready to assume responsibility. I am also sending the PDF file of this chapter. Please go through and revise all the notes. Thank you and Jai Gurudev.